Hello and very good morning to everyone. Hello and very good morning to everyone. My name is Shatendra Chaudhary and I'm going to discuss or teach you all the subject which we call as the natural science of physics. Now today's topic is Newton's law. Newton's law के बारे में हम लोग बात करेंगे. Newton's law समझेंगे कि Newton's law क्या है. तो उससे पहले एक आई वांट टू गिव यू अ शॉर्ट और अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स. ये न्यूटन्स लॉ जो आया वो आया कहाँ से? ये न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स के दिमाग में जो आया कि इस तरह का एक लॉ हो सकता है और मोशन जो है वो इस तरह के पैरामीटर्स की वजह से कंट्रोल होते हैं. तो ये पहले ये कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ था एरिस्टोटल से. Aristotle was the person who first gave the concept of velocity, and he gave a concept, but he didn't define it properly. But he gave the concept of force at that time only. But the thing was that he was unable to define the force properly. And after that, in the time of Galileo developed that part quite well. But the thing was that his approach was a little bit different as a result. The proper explanation of the force and the nature of force and how force is responsible for the motion of the body, it was not in that particular precise manner. Actually, at that time, Galileo given all this concept, partly he used to explain these phenomena, uh, uh, partly mathematics and partly geometry. पूरी तरह से मैथमेटिक्स और पूरी तरह से ज्योमेट्री से या फिर पूरी तरह से ज्योमेट्री या पूरी तरह से मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज नहीं किया गया था, जो कि न्यूटन ने सबसे पहले किया. न्यूटन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ और ही डेवलप्ड the new branch of mathematics called calculus. He used the calculus in explaining the motion of the body, what we call as the dynamics of the body. तो ये जो डायनामिक्स या मैकेनिक्स है, ये बॉडी का मोशन रिलेटेड जो भी एनालिसिस है, ये सब न्यूटन ने फुल कंप्लीट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से या फिर कॉन्क्रीट मैथमेटिकल बेस के ऊपर पहले सबसे पहले जिसने काम किया था, दैट वाज आइजैक न्यूटन. तो नाउ इफ आई डिस्कस अबाउट न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ क्या है? व्हाट न्यूटन्स लॉ टेल्स अस दैट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, what we come to know, the first law is also known as the law of inertia. And now what is inertia? Inertia is that particular quantity, as you all know, आपको पता है कि inertia is that particular quantity due to which the body tries to retain its state. वो अपने स्टेट को रिटेन करने का कोशिश करता है. दैट इज इफ अ बॉडी इज इन मोशन, इट वांट्स टू कंटिन्यू it in motion, and if a body is at rest, it wants to continue its state of rest. Now the first law gives the law of inertia. That is, the first law actually defines or gives the definition of inertia. What the first law tells us? From the first law we come to know that every body continues in a state of rest or uniform motion unless and until it is acted on by some impressed unbalanced force to change that state. That means what? कि कोई भी बॉडी अपना वो पर्टिकुलर स्टेट मेंटेन करेगा जब तक ना हम लोग उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई ना करें. That is, if a body is at rest, so it will always be at rest. एक ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ है कहीं पर, तो वो लेकिन वैसे ही रखा हुआ रहता है जब तक ना हम लोग उसको हटाएं. तो हटा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. हम लोग उस सिस्टम के बाहर आके एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. क्यों इंटरनल फोर्स नहीं होगा, क्यों एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, थोड़े ये हम लोग को थोड़े बाद में पता चलेगा, व्हेन वी विल गो थ्रू द थर्ड लॉ. बट फिलहाल फर्स्ट लॉ से हम लोग को क्या मिलता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो इनर्शिया, उसका एक डेफिनेशन मिलता है हम लोगों को. और उसके संग संग क्या है कि फोर्स का एक इंट्रोडक्शन भी मिलता है कि एक ऐसा पैरामीटर है जो कि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया को चेंज कर सकता है. दैट इज इफ इट बॉडी दैट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट विल change it into motion. Or if a body is at inertia of motion, it will change the state to rest. So the force is that particular factor. अभी तक हम लोग को यही पता चला. Now from the second law we get the proper definition of force, or and the proper explanation of force. That is,
The rate of change of momentum is directly proportional to the impressed unbalanced force, and it takes place in the direction in which the force acts. That is what the Newton's second law is telling us, that what this force is. It is nothing but it is the rate of change of momentum. The momentum change होने का जो rate है वही है ये. और ये तो कोई भी बॉडी में अगर मोमेंटम का चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली देयर द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो इसीलिए यहीं से हम लोग को सेकेंड लॉ से वो P इक्वल्स टू एम ए ये फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है. फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट लॉ और द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स or Newton's third law of motion. So Newton's third law of motion gives us the nature, explains us that how these nature of forces are. The third law is telling that for every action there is an equal and opposite reaction. So whenever a force is applied on any object, the object also applies an equal and opposite force to to that particular individual or to that particular system who gave who actually first applied the force. That is, whenever you are applying a force, that is what we call an action, and when the object gives us the force back, equal and opposite force back, that is what we call the reaction. So now, this Newton's third law is telling that always there will be a if there is an action, there will be an equal and opposite reaction. That means what? Ki, suppose if I use a whiteboard, then it will be easier to explain. So, suppose if I consider this to be a body, so this is body 1, and if I consider another body, suppose this is body 2, then if body 1 applies a force to body 2, वो हम क्या बोलेंगे, that force is F12. That is, the body 1 is applying a force, suppose, on body 2. So that is F12. Now, if F12 is applied, it will enforce the vector quantity, so it will be in a particular direction. So, what Newton's third law is telling, then as a result, of this, this body 2, this particular body, this body 2 will apply a opposite force which is equal in magnitude to body 1. Suppose this force is F21. So the force applied by the body 2 on body 1. So this is F21. So eventually, what Newton's third law is telling, that F12 equals to minus of F21. Minus sign comes because there is the force is equal but opposite in nature. So from this, what we get, that F12 plus F21 will be equal to 0. Now, so this is the important thing, that now what we are getting, that the sum of the internal forces is actually equal to 0. So Newton's third law is telling that the sum of the internal force acting on the system is equal to 0. So what we get, that the total internal force of a system
the net internal force of a system is always equal to zero. So if this is the situation, then it's quite natural that in order to change the state of the system, uh, obviously you have to apply an external force, because internal force or the total internal force is equal to zero, which implies that the net effect of the internal force becomes zero. So that is what Newton's third law tells us. Now, if I again uh, share the board, so ये हम लोग को समझ में आया कि न्यूटन्स तीन लॉज क्या है। अब क्या है कि हम लोग को न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना है। एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम लोग जो करेंगे वो क्या है कि देखो, बहुत ही बेसिक न्यूटन्स लॉ का जो एप्लीकेशन है, न्यूटन्स लॉ का सबसे बेसिक एप्लीकेशन है पर्सन ऑन अ लिफ्ट। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं, जैसे कि मान लो कि जब व्हेन अ हॉर्स स्टार्ट्स रनिंग, तो ऑब्वियसली क्या है, वो देखोगे थोड़ा सामने की तरफ झुक के फिर दौड़ना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि व्हेन इट लीन्स फॉरवर्ड अ लिटिल बिट, तो क्या है कि इट एक्चुअली अप्लाइज अ फोर्स ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जब वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, हाँ, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स काम करता है ऑन द हॉर्स, एंड दैट फोर्स एक्चुअली makes the horse to move, and due to which the cart also moves, which is attached to the horse. इसके सिवा भी हम लोग के पास और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, which from which we get this fact that there is lots of examples of Newton's laws of motion. Uh, One of the very popular example is that a person on a lift. Person on a lift is a very popular example of Newton's law of motion. So what we are saying, person on a lift. Sorry, probably ये व्हाइट बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके फाइन, नॉट एन इशू। तो अब हम लोग यहाँ पे व्हाइट बोर्ड यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज अनदर व्हाइट। So I am closing this, just a second। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं कि पर्सन व्हेन अ पर्सन इज इन अ लिफ्ट, तो देयर आल्सो ड्यू टू सम न्यूटन्स लॉ कुछ तरह का इफेक्ट्स होता है। दे आर नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। देखोगे आप लोग सभी देखोगे कि व्हेन वी आर इनसाइड द लिफ्ट, व्हेन वी गो इन, वी मूव यूजिंग अ लिफ्ट, तो दो तरह का मूवमेंट हो सकता है। आइदर यू गो फ्रॉम डाउनस्टेयर्स टू अपस्टेयर्स, और एल्स you go come from up to down. So in both the cases, either the lift is ascending or lift is descending. In both the cases आप लोग देखोगे कि आप लोगों के जब ये लिफ्ट ascend करता है या descend करता है, तो हम लोगों को एक अजीब सा फीलिंग होता है। तो ये क्या है और क्यों होता है, ये समझेंगे। इससे पहले देखो कि हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और डायग्राम ड्रॉ करके हम लोग ये न्यूटन लॉ को समझने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग अ, एक स्क्रीन शेयर करते हैं। चलो, let's share a screen। अभी क्या है, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि a person, when a person is in a lift, so किस तरह के एक्टिविटीज वो होता है। so also okay, person in a lift। अभी ये दो तरह का सिस्टम हो सकता है। either the lift is moving upward
और दूसरा क्या है, the lift is moving down. Now whenever the very simple thing is that कि हम लोग पहले वाले पार्ट में अगर जाएं तो if I discuss this fact that the lift is moving upward, तो in that case क्या होगा कि if this is the lift and this is not, and the lift is moving upward, so in this direction the lift is moving in this direction. We suppose there is a person here. Now a force is acting vertically downward. What is this force? This force is nothing but the weight of the body, which we can say to be mg. Okay. Now the lift is moving upward. Okay, so the acceleration, if the total mass of the lift along with the person, or the if I consider that the mass of the person is m in this case, so the acceleration of the person will be the same as the acceleration of the lift. So इस इंसान का एक्सेलरेशन क्या होगा, सपोज द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, तो इस आदमी का भी एक्सेलरेशन ए ही होगा. ओके, सो if the mass of the person is m, small m, in that case एक फोर्स काम कर रहा है which is due to the upward motion of the lift, और वो क्या है, if I say to be f dash equals to m into a, this force is acting on the person since the lift is moving upward. Next thing is that कि इसी since the weight is acted downward, the person's weight is acting downward, so इसीलिए एक फोर्स है, ऑब्वियसली इसके फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ एक ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स आर काम करेगा ड्यू टू विच इट विल एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन फोर्स विल बी अपवर्ड. नाउ आर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन और एंड दिस फोर्स एफ डैश इक्वल्स टू एम ए, दिस इज आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज acceleration is upward and mg is downward. So in this case r plus f dash equals to mg I can write. So in this case r equals to mg minus f dash. So r equals to mg minus ma. Just a second. Uh, I just I'm very sorry. I just made a small mistake in this case. जो इक्वेशन है, इक्वेशन थोड़ा चेंज होगा. Actually, what we can write in this case is that देखो एक्चुअली ये R और mg का जो फर्क है, एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन R एंड mg is actually the net resultant force ma due to which the object is moving upward or the person is moving upward. So I can write f dash equals to R minus mg, or R equals to what, f dash plus mg. In this case the reaction force R will be ma plus mg, or in this case the reaction force R equals to m into a plus g. So when the lift moves upward with an acceleration a, we just feel a bit heavy because the reaction force over on us increases. So we just feel a bit heavier. Okay, so this is when the lift moves upward. But what happens if the lift moves downward? अगर ये लिफ्ट मान लो, यही लिफ्ट अगर नीचे की तरफ मूव करे तो क्या हो? If the lift moves downward, then in the sense, in that case, lift moving down. When the lift moves downward, so this is the person.
Now the lift is moving downward with an acceleration a. Now the weight acting over this person is mg, because a small m is the mass of the person and g is the axis of the gravity. And now obviously the reaction force R will be upward. So in this case, it is quite natural that the force F dash equals to ma. So the reaction force R in this case will be, in order to calculate the reaction force R, what we can say is that R minus F dash, sorry, R minus mg, or R minus mg equals to minus ma. I can write this thing that R minus mg equals to minus of ma, because the difference between R and mg, since R is moving upward and mg is moving downwards, the difference between these two forces will give a result uh, along the upward direction, but A is in downward direction. So that's why I can say that R minus mg equals to minus m. और इसको अगर और इजीली आप समझना चाहते हो तो what I can say that uh, we can use this fact also, that in this case the difference between these two forces, that is mg and a, the difference between these two forces is giving me the resultant upward force R. So I can say that mg minus ma equals to R also. So R equals to mg minus ma. So R equals to m into g minus a. So this is the reaction force which is acting on the body. Now what we can see that when the lift is moving downwards, so the reaction force R equals to m into g minus a. That is, the reaction force is uh, uh, getting lowered, or it is the reaction force is decreasing, got decreased. That is, it's g minus a. Now if I use this result, R equals to m into g minus a, in such case, when the rope of the lift gets snapped. Now, if this is the lift, the person here, the lift is moving downward with an acceleration a. This is the normal direction r, and the weight of the person is mg below, vertically downward. Now, what if the rope got snapped? If the rope got snapped from this position, then obviously the lift will fall with the acceleration that will be equal to g. That is, in this case, what we say that the lift is free falling, free fall. That is, when an object falls uh, towards the earth due to the gravitational force of the earth, with an gravity which is equal to the acceleration due to gravity g, then such falls are called free falls. And if there is a free fall, then obviously that a is equal to g, and when a is equal to g, then r equals to m into g minus a. If I put using this formula, if I put a equals to g in this case, then r equals to m into 0. So r will be equal to 0. That is, when a person falls freely, uh, uh, or when an object falls freely, its weight is exactly equal to 0. This situation is called a weightlessness condition. This situation is called the weightlessness condition. And what if I can consider another situation like this? And what if the lift is moving downward and the lift is moving with an acceleration greater, lift is moving downward, and hypothetically, for the time being, if you consider that the lift is moving uh, downward with an acceleration which is greater than the acceleration to gravity, then what will be the situation? So R equals to m into
G minus A. So if A is greater than G, then R will be obviously a negative quantity. R will definitely be a negative quantity. So this condition is called the super weightlessness condition. In this case, the head of the person, actually the person will literally float, that is the head of the person will touch the ceiling of the uh, lift. So this is what is known as the super weightlessness condition. Well, so now this is one of the example application of Newton's law. More, there are a lot more applications of Newton's law. One of the very popular and very important application of Newton's law is that uh, in order to find out the acceleration of a connected body, or if you want to find out the or analyze the motion of connected bodies, in those cases, Newton's law is a very important concept. The application of Newton's law has an immense importance on those situations, or for those situations also. So, if I consider this particular thing, that now first thing is that what are bodies? Connected bodies. Now, what are the connected bodies? The connected bodies, suppose there is one body, there's a one block, a wooden block or anything of different material. It is placed on the surface of it may be a ground, or it may be it is placed on a table. Okay, so it has some mass m1, and over it another mass is kept. Suppose it has a mass m2. It has a mass, suppose m2. Now, if I pull this body with a constant acceleration a, so then obviously the whole system will move. Then what will be the acceleration of the total system? So, or there will be an example that there are two bodies. Obviously, more than two bodies are also there. It can be possible that there are more than two bodies also. Now, a force due to application of force and acceleration is along this direction. Now, if the whole object moves, then there obviously the total acceleration, what will the total acceleration of the whole system? Remember this thing, that these two problems are not the same. In this case, one block is placed over another block, while here the two blocks are connected with the help of a string. So these two problems are not the same. Uh, One more important problem is that the very important application of Newton's law is the Attwood's machine. Attwood's machine. Attwood's machine is something like that. It looks like that. That you have a pulley, and over from the string of the pulley to over the string of the pulley, uh, two objects are connected. One has a mass m1 and another has a mass m2. Now, if one moves downward with certain acceleration a, then obviously the another will move upward with a certain acceleration a. The acceleration will be same, but if one moves downward, then the other will move upward. So in this case, what is the uh, expression or formula for the net acceleration of the system? So, so these are few of the examples of Newton's law. So in order to formulate or calculate the or analyze the dynamics of these connected bodies using Newton's law, we use a very typical and very important concept of physics, what we call as the free body diagram. It's known as the free body diagram, or people write FBD, because आजकल तो सभी लोग सब कुछ शॉर्टकट में ही बोलते हैं. It's POV, point of view. इसी तरह, so free body diagram or FBD के
बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब एफबीडी में क्या है, एफबीडी में क्या है कि सबसे पहले हम लोग को ये करना पड़ता है कि एक सपोज मान लो कि कोई एक प्रॉब्लम दिया गया है कि देयर इज अ बॉडी, तो देयर इज वन बॉडी एंड इसके ऊपर में दूसरा एक बॉडी ऐसा प्लेस किया हुआ है। ओके, सो टू बॉडीज आर प्लेस्ड लाइक दिस। एक का मास दे दिया m1, दूसरे का मास है m2, and now an acceleration a is acting in this direction, that is m1 is moving along this direction. So obviously ये whole system का तो acceleration क्या होगा, whole system का acceleration भी a होगा क्योंकि a is a constant acceleration. लेकिन what will be the expression for this? तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी प्लेस किया है ना, ये m1 बॉडी के बारे में अगर हम लोग सोचें, जस्ट दिस इज द कांसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, कि हम लोग को अभी फोर्सेस किस डायरेक्शन में और किस तरह काम करना है कर रहा है वो हम लोग को पहले ड्रॉ कर लेना पड़ेगा, द हाउ द फोर्सेस आर एक्टिंग। तो इन दिस केस अभी इस प्रॉब्लम में देखो हम लोग के पास क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो वर्टिकल, जिसका मास है m1, तो उसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, सो इट विल बी m1g, m1g विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। सो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा जो है r1। नाउ m2 इज प्लेस्ड ओवर m1, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी एक फोर्स काम करेगा, सो इट विल बी m2g, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा बट ऑन द ब्लॉक m1। और इसके ऑपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा, दैट इज r2। नाउ the whole scenario left is resides in this particular case that m1 नीचे की तरफ है, m1g नीचे की तरफ है, m2g ऊपर की तरफ है और r1 भी ऊपर की ही तरफ है। So the whole thing is kept at the whole thing is attached to one another, or I can say that the whole thing is when the object is moving, the whole thing is as it is. तो इसके लिए uh, मेरा अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, सो नाउ आई हैव ड्रॉन द डायग्राम एंड आई हैव कि कौन सा फोर्स किस तरफ काम करता है ये हम लोगों ने देख लिया। अभी नेक्स्ट चीज क्या है कि नेक्स्ट चीज है हम लोग को क्या करना है कि फोर्स इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, ये जो फोर्सेस का इक्वेशन है ये हम लोग ध्यान से लिखना है। अभी इक्वेशन ऑफ फोर्सेस हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी यहाँ पे देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये m1g ये नीचे की तरफ काम कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो m2g ये भी नीचे की तरफ काम कर रहा है, और ये जो रिएक्शन फोर्स है r1 ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है। सो अभी देखो कि ये जो m2g है ये इसके ऊपर एंड m1 के ऊपर प्लेस किया है एंड इट इज कम्प्लीटली एट रेस्ट, तो ऑब्वियसली r1 इज बैलेंसिंग m2g आई कैन से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे r1 और m2g में एक बैलेंस हो जा रहा है, इसी की वजह से ये m2 जो है वो m1 के ऊपर रेस्ट में है, अदरवाइज नहीं होता। नाउ so what will be my equation of motion? So in this case my equation of motion will be, since m2g is acting downward and m1g is also acting down, so m1g प्लस अभी इक्वेशन ऑफ फोर्सेस हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी यहाँ पे देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये m1g ये नीचे की तरफ काम कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो m2g ये ये भी नीचे की तरफ काम कर रहा है, और ये जो रिएक्शन फोर्स है r1 ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है। सो अभी देखो कि ये जो m2g है ये इसके ऊपर एंड m1 के ऊपर प्लेस किया है एंड इट इज कम्प्लीटली एट रेस्ट, तो ऑब्वियसली r1 इज बैलेंसिंग m2g आई कैन से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे r1 और m2g में एक बैलेंस हो जा रहा है, इसी की वजह से ये m2 जो है वो m1 के ऊपर रेस्ट में है, अदरवाइज नहीं होता। नाउ सो व्हाट विल बी माय इक्वेशन ऑफ मोशन? So in this case, my equation of motion will be, since m2g is acting downward and m1g is also acting down, so m1g plus m2g, uh, ये the addition of these two actually already getting balanced for each other, तो इन लोगों का जो इंडिविजुअल इफेक्ट है ये इफेक्ट जो है वो नलिफाइड हो जा रहा है। तो इसीलिए क्या है, एफ इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, m1 प्लस m2 इंटू ए, और तो यहाँ से ए क्या होगा, f बाई m1 प्लस m2, f बाई m1 प्लस m2।
नाउ अगर हम लोग को if the system is like this that these blocks are connected by strings and the force F is F by m1 plus m2. Now अगर हम कोशिश करते हैं, suppose that you have one body and you have another connected another body and there is a force F is applied. Acceleration obviously इस direction में होगा. Suppose this is m2 and this is m1. तो obviously ये body जब इसको इस तरफ खींच रहा है तो इन दोनों के बीच में एक टेंशन काम कर रहा है T. Now obviously यहाँ से हम लोग को जो पता चल रहा है कि m1a acceleration m1a must be equals to T, and for the second part, that is F minus m2a, or I can say that यहाँ से भी F minus, देखो F इस तरफ काम कर रहा है और टेंशन इस तरफ काम, so F minus T equals to m2a. अगर इन दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करें तो since m1a equals to T, m1a equals to T, so F minus m1a equals to m2a, और F equals to m1 plus m2 into a, which eventually gives me, यहाँ से a मिलेगा F by m1 plus m2. So अगर दो बॉडीज कनेक्टेड है तो यूजिंग द फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग इस तरह प्रॉब्लम को कर सकते हैं. दैट इज यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर्स इस तरफ काम कर रहा है और टेंशन इस तरफ काम कर रहा है. तो इफ दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द टेंशन, तो इस ये टेंशन और इस फोर्स का डिफरेंस क्या करेगा, इस बॉडी को इस तरफ मूव करवा रहा है विद एक्सेलरेशन a. एंड फॉर द लास्ट पार्ट के लिए क्या हो रहा है, लास्ट पार्ट के लिए ऑब्वियसली कि ये जो बॉडी का खुद का जो एक्सेलरेशन है, m1 बॉडी का जो खुद का एक्सेलरेशन है, दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द टेंशन T, which is making the this body move. अभी उसी तरह अगर हम लोग थ्री बॉडी सिस्टम को कंसिडर करें तो दिस इज द फर्स्ट बॉडी m1 is connected to the second body m2 and this is connected to the third body m3, and the force F is applied along this direction. So acceleration भी obviously मेरा इसी तरफ होगा. तो obviously यहाँ पे हम लोग का एक टेंशन फोर्स काम करेगा, सपोज दिस इज T1, और यहाँ पे एक टेंशन फोर्स काम करेगा, सपोज आई एम नेमिंग इट टू T2. तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि m1a equals to T2 होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं. Now if I go to the next part, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है कि in this case m3, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो F minus T1 equals to, eventually it is m3a. Now अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि T1 जो है इस तरफ काम कर रहा है, और अभी यहाँ पे देखो हम लोग का m2 ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो रहा है. नाउ फॉर दिस ऑब्जेक्ट m2, so I can say that, just a second, अभी देखो हम लोग के यहाँ पे क्या है कि F माइनस T1 इक्वल्स टू m3 है, और यहाँ पे देखो कि ये जो फोर्स है T1 माइनस T2 दैट विल बी इक्वल्स टू m2a, ये बीच वाले ब्लॉक के लिए. तो हम लोग को तीन इक्वेशंस मिला, 1 2 और 3. तो यहाँ से जाहिर सी बात है अगर 1 और 3 को हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग को इन दोनों से क्या मिलता है, फ्रॉम 1 एंड 3 हम लोग को मिलता है कि T1 माइनस m1a इक्वल्स टू m2a, जहाँ से T1 हम लोग को मिल जाता है m1 प्लस m2 इंटू a, और इसी T1 को अगर हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करते हैं
using इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में अगर हम पुट करते हैं तो एफ माइनस एम वन प्लस एम टू इंटू ए इक्वल्स टू एम थ्री ए। तो यहाँ से क्या होता है हम लोगों का एफ इक्वल्स टू व्हाट वी विल गेट दैट एफ इक्वल्स टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू ए। तो यहाँ from here I will get a equals to f by m1 plus m2 plus m3। Just for two bodies क्या था f by m1 plus m2 था, for three bodies the acceleration will be f equals to m1 plus m2 plus m3। And similarly using these three sets of equations, using these three sets of equations t1 and t2 also can be calculated since I got a now. uh, so now I come to the last problem, that is Atwood's machine. Atwood's machine. The Atwood's machine is a device like this. There is a pulley and a string is placed over the pulley in this particular fashion. A string is placed over the pulley in this particular fashion. So now if this block has a mass m1 and the second block has a mass m2, so both the weights are acting downward, m1g and m2g. Now we should be careful about one thing, that every time the tension always acts, in case of pulley, the tension always acts towards the pulley. This is the thing you should remember. The tension always acts towards the direction of the pulley. So if this is the case, then from the first equation, now suppose this body is moving upward with an acceleration a, because this body is moving downward with an acceleration a. Because in this case I have considered that m1 is less than m2. So this body is moving downward, as a result this body is moving upward but with the same acceleration. Now if I try to write the equations, now this is my uh, diagram. If I want to write the equations, then obviously since this is moving upward, so t minus m1g equals to m1a is one equation, and m2g minus t equals to m2a is equation number 2. Now if I solve these two equations, I will be able to get the acceleration of the whole system. So what will be the acceleration of the whole system if I add these two equations? Adding 1 and 2, इक्वेशंस 1 और 2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या है, देखो कि ये t का जो t जो है ये माइनस ये प्लस ये तो कट जाता है, तो हमको यहाँ से मिलेगा m2g माइनस m1g इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो यहाँ से हम लोग इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि a विल बी इन दिस केस m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 into g। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अगर एक्सेलरेशन ये हो तो अभी हम लोग ए का वैल्यू को किसी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में यूज करें, अगर मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 में, सपोज हम लोग अगर इक्वेशन नंबर 1 में ए का वैल्यू इसका वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशन में यूज करते हैं, if I put this in this particular equation, so t minus m1g equals to m1a, so t minus m1g equals to m1 into a means this one, m2 minus m1 by m1 plus m2 into g। तो यहाँ पे now t equals to this will be in this side, so m1 if I take common, then g plus, sorry, mistake, so I can take g common, m1 and m1 also I can take m1 also common. So if m1g is taken common, then
1 plus, now if I solve this, the m1s will get cancelled out, and from this we will get 2 m1 m2 by m1 plus m2 into g. So this is the tension acting on the strings of this Etude machine. So this is all about today's lecture. So in what we have discussed the Newton's law, and these are the applications of Newton's law, that if the body is connected, or if the body is connected more than one body, that is two, three, or four, or any number of bodies are connected by a string, or if a block is placed over another block, if it's a Atwood's machine like this. That is a string, pulley, and mass system. An Atwood's machine can be said or considered that it is a string, pulley, and mass system. You can see there is a string. It is connected by and there is a two blocks, that is two masses, which are connected by a string, and there is a pulley over it. So in all of the cases, this using this free body diagram and the application of Newton's law, we can find out the acceleration of the system and the tensions acting on the system, or we can say that we can analyze the whole dynamics of the system. So for today, this is all about Newton's law of motions. Thank you.